Hello and welcome to Dr. Varsha Gaitonde's channel. In part 1 of hybrid breeding in wheat, we have discussed about the basics of wheat taxonomy, origin, evolution, different species, cultivated species, gene pool, scientists, mode of pollination, inflorescence, different equipments for pollination and emasculation, then alternative pollination, scope of hybrid breeding, difficulty in hybrid breeding. So now I'm going to tell you about the requirements for hybrid seed production in wheat or any crop. Whenever we go for manual emasculation and pollination, it is time consuming and tedious process. Labor intensiveness is one of the major constraint. Apart from that, how long you can go for this process? Entire plot may come for pollination at a single stage. At that time, five, if you are involving more number of labors also, it will be very difficult to handle, too difficult to keep all the records and remember the things, and to see after 2 3 days even it is ready for pollination or not. You may lose many of the lines. In order to avoid that, we should have an efficient cross pollination between the inbred lines. It is practically achieved by planting male sterile material plants with good pollen recipient properties in close proximity with parental plants with good pollen shedding properties. Effective male sterility of the maternal plants is a general requirement. Generally, if we talk about wheat, the basic and oldest method was cytoplasmic male sterility, okay, or else we can say simply male sterility. In male sterile system, generally we use three lines: A line, B line, and R line. Whenever we are crossing A and B line, A is the male sterile line, B is the fertile line or the isogenic line of A line, which maintains the fertility of A line. And whenever we cross A and B lines, we'll get the seeds of A, that is male sterile. Then we cross with R line, which is a fertile line, and we'll obtain hybrid seed. This is about the basic system of hybrid seed production in wheat. If we talk the other seeds production systems, in cytoplasmic male sterility only, there is YA type CMS, artificial induction through chemical hybridization agents, which is very popular in the Western countries, genetic male sterility, which includes photoperiod male sterility also, even it comes under cytoplasmic male sterility, chromosomal sterility, or else we can call as chromosomal engineering technique, then nuclear male sterility and transgenic male sterility. We'll discuss one by one. First is cytoplasmic male sterility in wheat. Since the cytoplasm of zygote comes primarily from egg cell, the progeny of male sterile plant would always be male sterile. That means female plays a dominant role here. CMS from Triticum timophoebe may be transferred easily to give strains of wheat, often called as B line or maintainer line, by using that strain as a pollinator, that is Triticum aestivum, as a recurrent parent in backcross in the successive generation of backcrosses. Male sterile line is known as A line, and three lines ABR lines are used here. Say this is a diagrammatic representation. Here you will find a male sterile mother plant. You are crossing with a maintainer line. You got male sterile mother. Again you are crossing with a father or fertility restorer, and you got the F1, that is a fertile line. In hybrid seed production, how it works means you are giving farmers the F1 seeds, and there is always a saying that farmer should not use the hybrid seed production in the subsequent years in order to go for hybrid seed production, because it will go for segregation. As you know, as per the Mendel's law, always the segregation ratio is 1:2:1 at genotypic level and 3:1 at phenotypic level. So we can't get the 100% true to type seeds in the further generations. Now, the different CMS sources in wheat. The popular one is T type, that is Triticum timophoebe. K type is Agilop kotsai, means
K type is obtained from Agilops kotsoi. V type is Agilops variabilis. D square type is Agilops crassa. Neon type is Agilops koschai, Agilops variabilis, and many other sources are there. AL CMS is Triticum aestivum subspecies Alborubrum. YA type is Triticum aestivum variety CA805. MSH1 is from Hardium chinensis. You should remember the most popular CMS source is Triticum timofevi. Other sources are Koschai, Ania restata, Agilops minutica, and Agilops chilens. Let's talk about YA type of cytoplasmic male sterility. This is developed by Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Science. For some years in China, this was a popular method of hybrid seed production in wheat. This type of CMS system is based on the cytoplasmic mutant derived from common Chinese wheat variety CA805. In this system, two pairs of independent major genes and some minor genes were found to be able to cause fertility restoration. This type line CMS line is of potential value for hybrid breeding in China. Second kind of CMS is photoperiod sensitive cytoplasmic male sterility. Again, Agilops crassa is, or we call it as goat grass, is the source here. This has 15, if we are providing 15 long hours of photoperiod continuously, it is proposed as a new means of producing hybrid varieties. The PCMS line is maintained by self-pollination under short day condition, and hybrid seed can be produced through outcrossing of PCMS lines with a pollinator under long day conditions. That means to maintain the sterility and for maintaining the outcrossing or hybrid seed production, there are two different periods. If we should maintain the sterility, we should go for short day conditions. If we should go for hybridization, we should do it under long day conditions. Coming to the limitations of CMS system, as in general for CMS, fertility restoration is a major problem. Along with that, breaking of the restorer lines or losing the restorer line with some diseases or pest, this is also a major problem. Then penalty is also yield penalty or cytoplasmic penalty we call, that is also a major problem. Low level or no heterosis, high cost of seed production due to maintenance of ABR line. As you know, 3 lines we should maintain means lot of area is consumed. Incomplete male sterility, that means breakdown may happen. Tendency towards pistiloidy and meiotic instability in advanced generations. As you are commencing to F2 or F3 to obtain the uniformity, you will obtain this kind of problem. Limited option for source of RF gene and incomplete fertility restoration, as already told. Susceptibility of unpollinated florets of male sterile lines to infections by ergot. That means if you are using continuously a single restorer line means you will be acquainting with many of the diseases, maybe some ergot kind like Claviceps purpurea, thus compromising the quality of hybrid seed. We may lose the quantity if major diseases are affecting, and if some new diseases are affecting, we may lose the quality because ergot kind of diseases may cause non-attractiveness in the seeds. Next is fertility restoration system in wheat. As you know, fertility restorers means which will restore the sterility in wheat. Okay, some sources of fertility restorers are NP839, NP883, NP880 derived from Kalyansona. As you know, Kalyansona is a popular variety during Green Revolution period, and till now in many of the areas in India it is still cultivated. NP80-5, NP120, NP150, NP700, K53, K54, PB8, PB8A, PB11, all are some of the fertility restorers. Foreign varieties like Primary, Palmaris, Marcus are also good fertility restorers. Instead of these, other partial restorers have also been observed among the Indian varieties. Why these enormous varieties are considered for fertility restoration?
because, as you told, the susceptibility to pest and diseases or breakage of the fertility restoration process, we should go for multiple number of lines. Okay, so in this NP series and PP series I have discussed in the previous slide, all are derived by either pure line selection or maybe by pedigree selection by cross, like that. In wheat, these traditional methods of breeding is very popular rather than hybrid breeding. Anyhow, coming to genetic characteristics of fertility restoration system, here this is a deviation from Mendelism. You may find 3 is to 4 is to 9 is to 3 is to 4 is the segregation pattern here. This follows incomplete dominance with the epistatic action of single recessive allele with the ratio 9 is to 3 is to 4, that is supplementary gene action. Crossing primary palmaris triticum timophilae into Marcus, all these things are followed here. Highest restoration capacity is 80% obtained in primary, while Palmaris and Triticum spelta variety duhamelinum were partially effective, that were giving 34 to 38% of fertility restoration. Coming to the most other one popular method of hybrid seed production is fertility chemical hybridizing agents. This method is very simple. Here only two lines we should maintain. One line to spray and go for sterility, and other line is as a father line, that is a R line. Okay, A line and R line are sufficient for chemical hybridizing agent method of hybrid seed production. This is not a method, this is a technique used in order to get the hybrid, in order to go for sterilization. Okay, see in the figure, you have a mother plant which is a hermaphrodite. Okay, then we are spraying the gameticide, it will become male sterile. We are crossing again with a father line or a hermaphrodite line, and we are getting the F1 hybrid seed. So what should be the characteristics of good chemical hybridizing agent? It should be selective induction of male sterile condition, no effect on female fertility. If it is affecting the female fertility, we may lose the yield. It should only go for removing the male portion or killing the male portion or inactivating the male portion. Persistence of the effect of sterilize both early and late flowers on the same plant. If we are using the chemical hybridizing agent, we cannot predict that all the plants are giving or flowering at the same time. If some like may this wheat is a centripetal flowering for pattern it follows. If some flowers are coming early and some are late, means this should affect all the flowers. It may be late flowering or early flowering. Okay, reasonably wide window of application period to overcome the effects of adverse weather and different stages of crop growth. That means in heavy rains, heavy wind conditions also it should be effective. Efficient flexibility in the time of safe application. Sterility with a single application, no need of repeated application. See, repeated application may give or add to the cost of cultivation. No adverse effect on F1 seed quality or F1 seedling and plant vigor. That means residual effect should not be there. If residual effect is there, means in parents we are spraying, and in F1 what will happen, will get the sterility, means again yield gap shall obtain. No undue hazard, that is phytotoxicity or mutagenic effect to plants or to the environment. Effectiveness across several genotypes and economics by using CHA induced male sterility. It should have effect on many varieties or many species, like that it should be. Coming to the commonly used chemical hybridizing agents, in traditional way, malic hydrazide followed by anti-lodging chemicals are used. Height-reducing agents like ethefone or ethyl, gibberellins, RH531, RH532,
are the traditional ones. These chemicals showed strong phytotoxic effects and inadequate male sterility across a range of environments, and their commercial use was considered too risky. To avoid the limitations of traditional chemical hybridizing agents, next generation chemical hybridization agents are in the market, like fenridazone potassium, RH0007 or Hybrex, Cigatol compound SC2053 from Orson Company, acetidine 3 carboxylic acid from Shell Company, clofenset or Genesis from Monsanto Company. This is again a popular one. Then Synthofen or Kreuzer 100 is the trade name, from Sutton Union Research. Coming to the limitations of CHA, as already I have discussed, it should not affect the female line. It should it should not give residual effect or mutational effect, and should not be affected by heavy blowing winds or rains, all those things, and cost should be less. Next one is chromosomal male sterility system in wheat. Many of the students were asking about the XYZ system of hybrid seed production in wheat. This comes under chromosomal male sterility system. This involves recessive male sterility gene on a wheat chromosome and male fertility gene capital MS or dominant gene on homologous alien chromosome. In simple terms, XYZ system is not analogous to ABR system. Just remember this, because in XYZ system, chromosomal engineering is practiced. Chromosomal engineering means nullisomic system. Nullisomic means there are two complements of chromosomes are less. 2n minus 2 condition is nullisomic. Okay, that condition, recessiveness, is used in this XYZ system. Three lines involved here, heterozygous and homozygous lines will be found. These three lines are homologous for MS or male sterile recessive gene and contain 2, 1 and 0 doses of alien chromosome respectively. Remember, 2 doses of alien chromosome in X, 1 dose in Y and 0 dose in Z. Here, male sterility operates on sporophytic tissue in such a way that Y line produces 21 chromosomes and 22 chromosome gametes, X line produces 22 chromosomes, pollen only, and are relatively true breeding, and Z line are derived from segregating Y lines and are male sterile. XYZ system was given by Driscoll in 1972. Here, the process includes suitable nullisomics by irradiation process. That means we are using mutation breeding here again. 5 nullisomics, 4A, 4B, 5A, 5B, 5D are the chromosomal complements. What is A, B, D and all? These are the genomes in wheat. As you know, A, B, D are the 3 genomes in hexaploid wheat. These have been identified for this purpose. Z is a homozygous male sterile line, which is a breeding true for sterility. Remember, Z is male sterile line. There in ABR system, A is the male sterile line. Here, Z is the male sterile line, which is again homozygous. Y is a heterozygous, which segregates on selfing. If you are selfing the Y line, what you will get? You will get 3:1 ratio, 3 of Y line and 1 of Z line. Remember, Z is completely sterile line. X possesses 22 pairs of chromosome, 21 normal wheat chromosome and 1 from rye chromosome, which is a true breeding male fertile. That means X is just like your R line, which has 22 pairs of chromosomes and 21 normal wheat chromosome and 1 from rye chromosome. Initially, what will happen? Z seeds are obtained by selfing the Y lines. As I told, when we are selfing the Y line, we'll get 3:1 ratio. That is, 3 is your Y and 1 is your
Z. Okay, this is Z. What we are doing, we are going to multiply this Z continuously by selfing the Y line if we want the sterile seeds. Okay, that means to obtain the male sterile seeds we are using Y lines continuously by selfing them, we will get this. And further, Z plants produce only Z seeds. Part of Z seeds on pollination with Y produces Y seeds also, as I told, 3:1. In the initial step, we'll take Y as female stand and Y as if self, will get 1:3. Then first cycle, what we'll do, we'll cross the Z and X line in order to obtain the uh, fertile F1s. Okay, in the second and later cycle, what will go, as first cycle, till sufficient amount of Z seeds are obtained, we will go on selfing Y lines, then we will cross with X line to get the hybrid seeds. That is all the story about this XYZ system, remember. Okay, so it was used during 1970s but was having so many problems. Understanding the cytogenetic systems was a big problem. Many of the researchers were not understanding. After that, there was slight modification which included 4E male sterility system. Here you see, here coloring markers were used in order to identify which are the sterile line and which are the fertile lines. Okay, in this system, see here Y line is taken, which is a hermaphrodite. Light blue seed is a color indication given to Y line. When that was selfed, 64% of Z lines were obtained, that is white seed. Then 33% fertile father, again a hermaphrodite plant, and fertile X plant was also produced, which is indicated as dark blue seed. Remember, sterile Z seeds are indicated with white seeds with that particular marker. Then X line is given dark blue seed and Y line is given light blue seed color. Okay, this is the marker identification given to particular lines. By breeding them, when Z line is crossed with X line, we'll get the F1 hybrid. For your understanding, I'll just read the matter given here. X and Y lines are fertile, but the Z line is male sterile, that is having recessive MSMS system due to the absence of chromosome 4E. क्यों Z line sterile है? Because there is absence of 4E in the modified system. Use of 3 lines for production of male sterile line to be used as female parent in hybrid seed production. Male parent could be any elite wheat cultivar and will have nothing to do with XYZ system. All the 3 lines are homozygous for the recessive allele for male sterility located on 4bs chromosome. Additionally, alien chromosome 4e from Agropyron elongatum carrying dominant allele MS1 suppressing the activity of recessive MS1 is also involved. XYZ 4e system, X line has 2 doses, Y line has 1 dose, and Z having 0 dose of the alien chromosome as an addition of the normal complement. This in the previous slides also have discussed. In chromosomal male sterility system, the male parent need not contain fertility restoration system, so that no fertility restorer problem is encountered, which is generally associated with CMS. Remember, ये बहुत ही important point है कि CHMS and आपका CMS system में क्या difference है. That is, no fertility restoration problem in case of chromosomal engineering technique. For chromosomal male sterility, male parent for hybrid seed production can be designed to carry resistant genes for different diseases. मतलब क्रोमोसोम्स में जो ससेप्टिबल जीन हैं उनको अल्टर किया जाता है. These resistant genes may also be carried in the form of translocated alien segments bearing genes for disease resistance. Coming to the advantages of chromosomal male sterility over CMS type. Any deficiency in fertility restoration affect only the stage of hybrid seed production.
फर्टिलिटी रिस्टोरर का कोई ज़रूरत नहीं है, लाइक CMS में होता है. हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कैन बी परफॉर्म्ड इन एन एनवायरनमेंट अदर देन दैट इन विच द क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड. Male parent in the chromosomal system contain no special fertility restorer gene similar to those in the cytoplasmic system. Here, male parents for the stage of hybrid seed production can be developed which possess different resistant genes for a particular pathogen. Hybrids are able to contain translocated alien segments bearing disease resistant genes. एक तो डिसीज़ रेजिस्टेंस हो गया, फर्टिलिटी रिस्टोरर प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और जैसे हम चाहिए वैसे क्रोमोसोम को मैनिपुलेट कर सकते हैं with specialized persons. Okay. Next is limitations of chromosomal male sterility. Female parent will have recessive MS1 MS1, so that MS1 allele for male sterility will have to be transferred to the desired female parent. मतलब कंटिन्यूसली बैक्रॉस करते जाना पड़ेगा. फिर बैक्रॉसिंग में डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक पेनाल्टी या कुछ भी, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ द अनडिज़ायरेबल सेगमेंट, ये सब बैक क्रॉसिंग में प्रॉब्लम रहता है. डिज़ायर्ड मेल पेरेंट विल हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू मोनोसोमिक एलियन एडिशन लाइन कैरिंग एलियन क्रोमोसोम 4E विथ डोमिनेंट एलील MS1. ये फिर से एक दूसरा प्रॉब्लम है. नेक्स्ट मेल स्टेरिलिटी सिस्टम इज़ कंडीशनल मेल स्टेरिलिटी. कंडीशनल मेल स्टेरिलिटी मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही वो मेल स्टेरिलिटी एक्सप्रेस करेगा, लाइक स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन मैकेनिज्म. पर्टिकुलर केमिकल मैंने स्प्रे किया तो वो स्टेराइल हो गया, अगर मैं नहीं स्प्रे कर रही हूँ तो दैट विल बिकम फर्टाइल एंड एमिनेबल फॉर प्रोड्यूसिंग द एफ1. ओके, तो इसमें क्या होता है, इट अपीयर्स इन नॉर्मल फर्टाइल प्लांट्स ऑन एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन. कोई भी टॉक्सिन कंपाउंड स्प्रे करके मेल पार्ट को सप्रेस और किल करेंगे. दिस इज जनरली अचीव्ड बाय ट्रांसजेनिक अप्रोच एंड इज ऑफन यूज्ड टू ऑब्विएट द नीड ऑफ द मेंटेनर फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेल स्टेराइल फीमेल लाइन्स along with production of hybrid seed. Transgene is made to express in a tissue specific manner so that it will facilitate conversion of the protoxin or supplemented from outside into a phytotoxin on application of protoxin in a tapetum specific manner. tapetum जैसे आप जानते हैं स्टेमेंस में रहता है और पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने में ये टेपेटम लेयर स्पेसिफिक रोल उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रोल प्ले करता है. अगर इसी को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तो पॉलन प्रोडक्शन नहीं होगा. ओके, देयर आर 3 मेजर एग्जांपल्स फॉर दिस पर्टिकुलर conditional male sterility system, 2 in tobacco and 1 in Arabidopsis. Tobacco में एक ट्रांसजीन CYP105A1 स्टेप्टोमाइसिस ग्रीसियोलस से लिया हुआ है. जैसे आप जानते हैं ट्रांसजेनिक मीन्स किसी भी जेनेरा, किसी भी स्पीशीज़, किसी भी फैमिली से कहीं से भी आपने मे भी आप ह्यूमन से जीन लेके प्लांट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई एनिमल से ले रहे हैं, कोई दूसरे प्लांट जेनेरा से ले रहे हैं, तो कुछ भी करें आप, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक. ट्रांस मीन्स फ्रॉम सम अदर सोर्स यू आर टेकिंग ए जीन. तो यहाँ पे जीन कहाँ से लिया है टोबैको में? स्टेप्टोमाइसिस ग्रीसियोलिस से CYP105A1 लिया है. तो इसको क्या किया है, ये एनकोड्स साइटोक्रोम 450P दैट मेटाबोलाइजेस द प्रोहर्बिसाइड R7402. R7402 एक हर्बिसाइड है जिसको प्रोटॉक्सिक या स्पेसिफिकली हम प्रोटॉक्सिन ही बोलते हैं, उसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा, स्प्रे करने के बाद में फाइटोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा. ए ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स विथ सल्फोनिल्यूरिया प्रोहर्बिसाइड लेड टू ड्रामेटिक रिडक्शन इन पोलन वायबिलिटी. तो ये केमिकल स्प्रे करने से क्या होगा, वायबिलिटी पोलन का रिड्यूस हो जाएगा. एक और ट्रांसजीन को इकोलाई से लिया है टोबैको में, नेम इज़ ARG और ERG-E. दिस एनकोड्स N-acetyl L-ornithine deacetylase which is made to express in tapetal specific manner. तो इसमें क्या होगा, जब N-acetyl L-phosphinothrycin जब प्लांट्स को हम स्प्रे करेंगे
It is deacetylate to produce toxic L-phosphinothresin, तो इसको ग्लूफोसिनोलेट बोलते हैं। इसको जब स्प्रे करते हैं तो क्या होगा, पॉलन एबॉर्शन हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है अरेबिडोप्सिस में, हियर ट्रांसजीन PEHA was used which encodes phosphonate monoester hydrolase derived from Burkholderia caryophyllae। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसजीन कन्वर्ट्स ग्लिसराइल ग्लाइफॉस्फेट। ग्लिसराइल ग्लाइफॉस्फेट क्या है, यहाँ पे एक प्रोटॉक्सिन है। इसको जब हम स्प्रे करते हैं तो वो ग्लाइफोसेट जैसे आप जानते हैं एक फाइटोटॉक्सिक है या हर्बिसाइड की तरह यूज़ करते हैं। तो ये अगेन टेपेटम स्पेसिफिक मैनर में वर्क करता है। व्हेन फर्टाइल ट्रांसजेनिक प्लांट्स वर ट्रीटेड विथ ग्लिसरॉल ग्लाइफोसेट, तो क्या होगा, इट इज़ कन्वर्टेड टू हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट लीडिंग टू पॉलन एबॉर्शन। ये 3 पोटेंशियल एग्जाम्पल्स है किस लिए, कंडीशनल मेल स्टेरिलिटी के लिए। Okay, so let's see the limitations of conditional male sterility. Requirement of large scale spraying of chemicals in seed production plots is a disadvantage which results in increased cost of production. Narrow application windows for application of herbicides. Transgenic technology demand additional tools like seed sorting using marker like seed color marker, जैसे मैंने डिस्कस किया था बार्नेस बार्स्टर सिस्टम में, या ये जो कंडीशनल मेल स्टेरिलिटी सिस्टम में हम पहले क्या करते हैं, मार्कर यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द फर्टाइल एंड स्टेराइल लाइन्स। ओके, तो वो फिर से एक हेडेक होगा। देन द प्रोडक्ट हैज़ टू गो थ्रू पासेज ऑफ डिफरेंट रेगुलेटरी सिस्टम, जैसे कि GM क्रॉप के लिए सीड चैन ही अलग होता है, जो रिलीज प्रोसेस होता है वो अलग होता है, जैसे जिसमें आइसोलेशन डिस्टेंस अलग होता है, स्पेसिंग अलग होता है, मॉनिटरी एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज़ अलग होता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, देयर विल बी ए लॉन्ग प्रोसेस। तो एक तो हर्बिसाइड स्प्रे करने का प्रोसेस बहुत ही कॉस्ट लेगा, उसके साथ साथ में ये रेगुलेटरी प्रोसेस भी लेगा, इसलिए दिस इज़ द कॉस्टलीस्ट मेथड आई कैन सी। उसके साथ साथ में बार्नेस बार्स्टर सिस्टम भी इसमें एक एक्सपेरिमेंटल तौर से देखा गया था। जैसे आप जानते हैं कोनोला में बार्नेस बार्स्टर सिस्टम वॉज वेरी पॉपुलर, बट सीडलिंग हाइब्रिडाइजेशन सिस्टम एक था जिसमें बार्नेस बार्स्टर सिस्टम को यूज़ किया। दिस मेक्स यूज़ ऑफ 2 जीन्स, बार्नेस जीन एनकोडिंग ए राइबोन्यूक्लियस एंड बार्स्टर जीन एनकोडिंग ए राइबोन्यूक्लियस इनहिबिटर। ओके, तो इसको बैसिलस अमाइलो लिक्विफिशियन से लिया था जीन्स विच आर मेड टू एक्सप्रेस ओनली इन एंथर टेपेटम इन टिश्यू स्पेसिफिक मैनर। In the female parent, Barnes gene is expressed in the tapetum and interferes with pollen development, causing male sterility. Male parent carries gene encoding Barster, which is expressed in F1 hybrid plants exhibiting activity of Barster, thus giving full seed setting in F1 plants. Male sterile line is maintained by backcrossing with a non-transgenic line. Backcross would give a mixture of seeds with मतलब 50% fertile होंगे and 50% sterile होंगे. So जब हम this particular ग्लूफोसिनोलेट को स्प्रे करेंगे तो 50% जो है उनको हम किल कर सकते हैं, so that only male sterile plants can survive when female lines are treated with glufosinate herbicide. तो ये डायग्रामेटिकली दिया गया है कैसे बार जीन एंड बार्स्टर सिस्टम वर्क करता है। देखिए यहाँ पे जब ट्रांसजीन एक ही पेरेंट में इंड्यूस करेंगे और जब ट्रांसजीन 2 पेरेंट में इंड्यूस करेंगे इफेक्ट कैसा रहेगा, तो डबल डोज होगा एंड सिंगल डोज होगा। दिस इज़ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड हियर। तो क्या होगा, जब बार जीन एक्सप्रेस करेगा यहाँ पे एंड उसके एक्सप्रेशन के साथ साथ में जब हम हर्बिसाइड स्प्रे करेंगे तो 50-50 जो होता है फर्टाइल एंड स्टेराइल, तो उसमें हम 50% स्टेराइल प्लांट्स को किल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सक्सेस ऑफ हाइब्रिड वीट अप्रोच। बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन को अटेम्प्ट किया था। द सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी हैज़ witnessed in parts of Western Europe and elsewhere, like promising results from winter wheat variety Hilster from Portugal and Germany. तो हिल्स्टर को लार्ज एरिया में यूज़ किया था। असुर प्लांट ब्रीडिंग कंपनी है, उन्होंने भी ये
अटेम्प्ट किया था, उसके साथ में क्रॉप को प्रोग्राम इन यूके, सिंजेंटास एम्बिशियस प्रोग्राम। सिंजेंटा ने 2014 से इंडिया में हाइब्रिड्स प्रोड्यूस करने का एक लक्ष्य रखा था। बाय 2020 दे वर प्लानिंग टू प्रोड्यूस ए सक्सेसफुल हाइब्रिड, बट टिल नो इट इज़ नॉट इन द मार्केट। अगर हम स्पेसिफिकली इंडियन कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, इन 2009 आईसीआर इन India initiated a network project on hybrid breeding using CMS approach, but it could not be successful. Among some private companies, Mahiko released two wheat hybrids, Pratham 7070 and Pratham 7272 in 2002 using CMS system with low input conditions of means ये किस लिए था, कहाँ के लिए? सेंट्रल एंड पेनिनसुलर इंडिया था, दैट इज़ लो इनपुट कंडीशंस ऑफ सेंट्रल इंडिया। देन इन अदर कंट्रीज CMS एंड CHA यूज़ करके चाइना में जिंगमाई 6, जिंगमाई 7, मैनिन्यांग 32, मेन्जोमाई 168, यूनसा 3, बीजिंग वीट नंबर 6, 7, ये सब बाय यूजिंग PGTMS दैट इज़ फोटोपीरियड ट्रांसजेनिक स्टेरिलिटी। तो इसमें चाइना पाकिस्तान ने भी कंट्रीब्यूट किया है फॉर वाटर एफिशिएंसी एंड ड्रॉट टॉलरेंस हाइब्रिड वीट ब्रीडिंग में इन्होंने काम किया। तो अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे और भी वेराइटीज़ रिलीज़ हुए बट कुड नॉट बी दैट मच पॉपुलराइज। तो यहाँ पे मैं थोड़े हाइब्रिड्स का नाम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ देती हूँ। हाइनोप्रीशिया दैट इज़ हाई यील्डिंग in France, Domino again in France, Quantum in USA for hard red winter wheat hybrid, high and consistent yield, Quantum 7460, Quantum 7817 for different purpose. देन एच स्टार को फिर से यूके में रिलीज़ किया था, मोस्टली हाई यील्ड, एडाप्टेबिलिटी, डिसीज रेजिस्टेंस, अर्ली मीडियम और लेट मैच्योरिटी, गुड बेकिंग एंड ग्रेन क्वालिटी, स्टिफ स्ट्रॉ। ये सब हिलस्टर, हाईलैंड, हाईब्रेक्स, हाईटेक, हाईबेरी, हाईसुन, हाइक्सो, इन सब का कैरेक्टर है। उसके साथ में हाईस्टर एंड हाईटेक सटन यूनियन ने यूके में रिलीज़ किया था। तो ये हाई टिलरिंग, पुअर डिसीज रेजिस्टेंस, मीडियम अर्ली मैच्योरिंग, सॉफ्ट टेक्सचर कैरेक्टर्स बेयर करते हैं। तो लेट अस सी द मोस्ट अर्जेंट चैलेंजेस ऑफ व्हीट हाइब्रिड ब्रीडिंग। आज तक हाइब्रिड ब्रीडिंग पॉपुलराइज नहीं हुआ है, इवन दो इतने सारे मेथड्स है, इतने मेथड्स तो किसी क्रॉप में भी प्रैक्टिस नहीं किया होगा जितने मेथड्स व्हीट में प्रैक्टिस या एक्सपेरिमेंट किया है। तो फिर चैलेंजेस क्या है? स्टेबल हाइब्रिडाइजेशन सिस्टम कहीं तो हम फेल हुए हैं। ओके, नॉलेज बेस्ड इम्प्रूवमेंट इन व्हीट होना चाहिए, जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन में होना चाहिए एमॉन्ग एलाइट लाइन्स, ऑप्टिमम डिज़ाइन, और हमें व्हीट हाइब्रिड इडियोटाइप बनाना बहुत ही ज़रूरी है। डेवलपमेंट ऑफ हेटेरोटिक पूल्स भी बहुत ज़रूरी है। रिमेंबर चैलेंजेस फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, 4 पॉइंट्स याद रखिए। स्टेबल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होना चाहिए, एलाइट लाइन में क्रॉस पॉलिनेशन के लिए नॉलेज बेस्ड इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इडियोटाइप जनरेट करना चाहिए, हेटेरोटिक पूल्स बनाना है। तो कहाँ कहाँ हमें अटेंशन देना है? एनहेंसमेंट ऑफ सीड प्रोडक्शन बाय मेकिंग द ब्लेंड हाइब्रिड्स। ब्लेंड हाइब्रिड्स मीन्स जैसे आप एक हाइब्रिड को लेंगे उसका यील्ड ज़्यादा ही रहता है, दूसरे हाइब्रिड भी लेंगे उसका भी अगर कोई पर्टिकुलर दूसरा कैरेक्टर अच्छा है, मे बी क्वालिटी, बेकिंग क्वालिटी और डिसीज़ और पेस्ट रेजिस्टेंस, तो हमें ब्लेंड हाइब्रिडाइजेशन में जाना है। मतलब 2 to मैनी हमें ब्लेंड करके अगर हम जाएंगे तो मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस और कैरेक्टर इम्प्रूवमेंट हम पा सकते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ बेनिफिशियल यूटिलाइजेशन ऑफ फिनोलॉजी, मतलब फ्लावरिंग कैरेक्टर्स को हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, मतलब QTL स्टडीज़, जो भी नए अप्रोचेस हैं, मे बी QTL और जीनोमिक सेलेक्शन, जीनोम एडिटिंग, ये सब हमें व्हीट में अर्जेंटली एफिशिएंटली अप्लाई करना है।
Okay, the extent of heterosis in wheat is 15 to 25% over meat parent and 10 to 15 over commercial parent is comparable to heterosis achieved in maize during early years in 1920s और 40s of hybrid maize breeding. That means wheat ऐसा कोई weak plant नहीं है, जितना heterosis maize एज अ क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट में ऑब्जर्व किया था उतना ही wheat में ही है. मतलब कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है हाइब्रिड ब्रीडिंग के लिए. इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बाय डेवलपिंग हाई यील्डिंग व्हीट हाइब्रिड्स टू अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्स फंक्शनल हैप्लोटाइप्स एंड देयर एसोसिएशन विथ हेटेरोसिस एंड बाय डेवलपमेंट ऑफ हेटेरोटिक ग्रुप्स. Genomic based prediction of single cross performance can increase the genetic gains per unit time. Recent stimulation studies and quantitative genetic theory suggest that reciprocal recurrent genomic selection may increase long-term selection gain of hybrid breeding by implementing two-step selection strategy involving population improvement and hybrid development. फिर स्पीड ब्रीडिंग हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए कंट्रोल्ड कंडीशन में नंबर ऑफ जनरेशन्स पर ईयर इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे फर्टिलिटी रिस्टोरेशन एंड एनहांस्ड क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं. देन रिप्लेसमेंट ऑफ केमिकल हाइब्रिडाइजेशन एजेंट्स, लाइक एक ही केमिकल हाइब्रिडाइजेशन एजेंट यूज़ करने से अच्छा है हम डिफरेंट यूज़ करें. टेक्नोलॉजीज लाइक स्प्लिट जीन एंड जीनोम एडिटिंग में बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ GMOs और नॉन GMO solution. Proactive public-private partnership and long-term investment and commitment will certainly help to attain the reality. ओके, तो हम अब तक क्या क्या डिस्कस किया? बेसिक्स ऑफ वीट, जिसमें ऑरिजिन, डिफरेंट स्पीशीज़, पॉलिनेशन हैबिट, बॉटनी, साइंटिस्ट, देन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कंस्टेंट्स एंड स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वीट देखा. फिर डिफरेंट वेस एंड मीन्स ऑफ हाइब्रिड प्रोडक्शन, जिसमें हमने CMS से स्टार्ट किया. तो CMS में 2 टाइप्स हमने डिस्कस किया. देन क्रोमोसोमल मेल स्टेरिलिटी देखा. फिर उसके बाद में हमने डिफरेंट सिस्टम्स को अब तक डिस्कस किया. देन हाइब्रिड्स सो फार रिलीज्ड के बारे में देखा. देन फर्दर इम्प्रूवमेंट, मतलब नियर फ्यूचर में हमें इमीडिएट स्कोप क्या है हाइब्रिड्स बनाने में, उसको भी डिस्कस किया. तो फ्रेंड्स, सो फार आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गिव द better knowledge about hybrid seed production in wheat. If you have any doubt, please put it in the comment section. Hope you like this video. Please share and subscribe to my channel. Thanks once again.